हेलो गाइस, इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक एंड टर्मिनोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू दीज टू कर्व्स। तो पहला कर्व जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जे फैट। ठीक है, नाउ फर्स्ट थिंग, ये जो कर्व है किन किन पैरामीटर के बीच में ड्रॉ किया जाता है वो समझते हैं, दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन। फिर उस जो कर्व से क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या टर्मिनोलॉजी बनेगी, वो देखते हैं। तो पहले मैं डेफिनेशन की बात करूं, इट इज ए कर्व ड्रॉन बिटवीन ड्रेन करंट एंड ड्रेन टू source voltage for constant value of gate to source voltage. Now in simple words, it is a curve drawn between ID versus VDS for constant VGS, that is gate to source voltage, अगर आपको समझना है शॉर्ट। So it is a curve drawn between the drain current and drain to source voltage for a given value of the gate to source voltage. Clear है यहाँ तक? Now अब हम कर्व ड्रॉ करते हैं। Now in this characteristic, the y axis is your current and the x axis is the voltage. Clear है? So start करते हैं इस characteristic को। So we will take the ID on y-axis and this VDS, the drain to source voltage, on y-axis. So it is VDS. Now I'm dividing this curve into three parts. First part is called, this is called where it is VP, and in this zone the VDS is greater than 0 but small. ये क्यों है अभी मैं बताऊंगा। Then in this region this VDS is greater than BP. Clear है? Then this voltage is called VDS max. Clear है? So I'm dividing this curve in three zone. Now in the first zone यहाँ पे पहले केस के हिसाब से डिस्कस करता हूँ। When VGS is 0 but VDS is greater than 0। अब अगर मैं सारी चीज जो बता रहा हूं वो किसके रिस्पेक्ट में बता रहा हूं, एन चैनल जे फैट के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं। नाउ व्हेन गेट टू सोर्स वोल्टेज इज 0 बट ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इज ग्रेटर देन 0 बट स्मॉल एंड पॉजिटिव। सो होगा क्या, एज VDS increases so more number of electron will move from source to drain, and hence there will be a drain current, and for this region and for this case ID is proportional to VDS. So this is linear relation. This is called linear relation when VGS is 0 but VDS is positive but small. Now in this region, for the small value of VDS, the drain current or the output current is linearly proportional to VDS. ठीक है? So I'm just having this characteristic. This is your characteristic. So in this region the drain current is directly proportional to your drain to source voltage. Clear? Now this region is called linear region or ohmic region. Now in this region JFAT is work as JFAT is behaves as linear
रजिस्टर, लीनियर रजिस्टर। ठीक है, आई होप सो ये बात समझ में आ गई होगी। नाउ in the second part, as VGS is applied, that means VGS is less than 0 and it is increasing in negative manner. So अब क्या होगा, जब VGS 0 था, जब VGS 0 था, तो जो हमारा एन चैनल का जेफेट का डायग्राम था, तो राइट हैंड साइड की जो डिप्लीशन रीजन थी वो एक्सटेंड होती थी, टॉप पर ज्यादा एक्सटेंड होती थी, बॉटम पर कम एक्सटेंड होती थी। इसकी वजह से क्या होता था, जो ड्रेन करंट और जो इलेक्ट्रॉन है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, उनको पास होने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती थी। अगर आप डायग्राम से भी इसको समझें तो ये चीज समझ में आएगी। व्हेन VGS इज 0, फर्स्ट केस में अगर मैं बात करता हूं, तो ये डिप्लीशन रीजन पहली साइड की रहेगी और ये डिप्लीशन रीजन जो है उस सेकंड साइड की रहेगी। जब VGS क्या था, 0 था, ये G था और ये S था। क्लियर है। बट यहां पर हम लोगों ने क्या लगा रखा था, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। देन देयर विल बी पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन देयर विल बी drain current, and in this region the drain current is directly proportional to VDS. Now अब क्या होगा जब हम VGS अप्लाई करेंगे। Now we are applying the VGS, so in case of n channel JFET VGS is negative. As VGS is applied, then the depletion region of this side will increase, and at some voltage, at some voltage these two depletion region touches to each other, then the channel conductivity will decreases. When channel conductivity decreases, the number of free electrons that is moving from source to drain are less, hence the drain current will decreases. फिर से समझिएगा, होगा क्या, as VGS increases, the depletion width of this side of gate to source side will increases at a particular voltage. This depletion region will touch the second depletion region. At this point, the conductivity of the channel decreases, hence the output or the drain current decreases, or at particular value or for a particular value of voltage it will constant. Clear है? So as VGS is applied, the drain current become कांस्टेंट। पहले क्या हो रही थी, इस रीजन में जैसे जैसे हम VDS को बढ़ा रहे थे वैसे वैसे ड्रेन करंट क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। बट जैसे ही हमने VGS लगाया, हमारी ड्रेन करंट क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। नाउ दैट कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज अ कर्व। नाउ दिस कांस्टेंट वैल्यू इज नोन एज this constant value. So here the ID is constant. Due to what? Due to VGS. Clear है यहाँ तक? Now this region is called, first name is pinch off region. Then it is also called saturation region. And it is also called as constant current source region. आई होप से ये बात समझ में आ गई होगी। नाउ मीनिंग क्या है, जैसे ही हम VDS को एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ऊपर लगाएंगे, देन द ड्रेन करंट विच अर्लियर वाज इंक्रीजिंग एज विद VDS becomes flat or constant. Clear? Now this flat value of this drain to source current is known as saturated drain to source current, that is called IDSS. Clear है? यहां तक बात समझ में आ गई होगी। So in this region VGS is less than 0 and VDS is positive and large. Clear? In this region the ID becomes constant. The ID is saturated, so called saturation current, hence its
its name of region, operating region is called saturation region. क्लियर है यहां तक? आई होप से ये बात समझ में आ गई. नाउ अगर हम बात करें इस बीपी वोल्टेज से लेफ्ट हैंड साइड का जो रीजन है दैट इज कॉल्ड लीनियर रीजन और लीनियर रेजिस्टर रीजन, एंड इससे राइट हैंड साइड का जो रीजन है दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट करंट रीजन और द पिंच ऑफ रीजन. सो बीपी इज अ डिसाइडिंग वोल्टेज. अगर हम बीपी से इफ यू अप्लाई द वोल्टेज बिलो द बीपी, इफ यू अप्लाई वोल्टेज बिलो द बीपी, देन द जेफेट इज वर्किंग एज अ लीनियर रेजिस्टर. दिस इज वर्किंग as linear resistor. This is working as linear resistor. If the applied voltage is less than the BP, that is called pinch off voltage, then the JFET is working as a linear resistor. Now if you apply voltage greater than this pinch off voltage, then your JFET is working as a constant current source, and the constant current source is like that. It is constant current source. Clear है यहाँ तक? Now, if we increase further drain to source voltage, then at a particular value of voltage, the drain current becomes very high. The drain current becomes very high, and this region is called avalanche breakdown region. Clear है now? दो तरीके के हमने ब्रेकडाउन पढ़े थे. एक जीनर ब्रेकडाउन होता है, एक एवलांच ब्रेकडाउन होता है. जो जीनर ब्रेकडाउन होता है दैट इज 5 to 6 वोल्ट पे अकर करता है, बट द एवलांच ब्रेकडाउन अकर्स एट द हायर वोल्टेज. क्लियर है? नाउ when this VDS is very large, in this zone the VDS is very large, now when applied drain to source voltage is very large, then there will be a breakdown occurs, and that point is known as the breakdown region of that JFET. क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई होगी. सो अभी तक मेरे को जो समझ में आया है, जो JFET है, अगर हम जो BDS है वो स्मॉल और पॉजिटिव लगाएंगे और VGS को 0 रखेंगे इन दिस रीजन, तो VGS is 0, then this JFET is working as a linear resistor. Now when the applied voltage VDS is greater than the pinch of voltage and VGS is applied, then JFET is working as constant current source or pinch off region or in saturation region. But when your VDS is greater than a particular value, that is called drain to source voltage maximum value, then your JFET is working in the avalanche breakdown, and in that avalanche breakdown region the drain current is very high. क्लियर है यहाँ तक? सो आई होप सो जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है वो अभी तक आपको क्लियर हो गई होगी. नाउ अब हम इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ी से चेंजेस करते हैं. वो क्या चेंजेस करता हूं? नाउ सपोज इफ VGS is applied, now this curve is for VGS 0. This black curve is for VGS 0. This curve is for VGS 0. Now as we apply VGS in negative manner, then that curve look like that. For this VGS minus 1 volt, sorry, minus 1 volt, it is minus 1. Then for next value of VGS, this is for next value of VGS minus 2 volt. Then suppose I'm applying next to third value of VGS, then the curve is like that. VGS minus 4 volt, like that. Clear है? So as VGS increases in negative manner, then the drain current that is saturated, whose value is decreasing. Suppose for VGS 0, this is the amount of drain to source current, that is maximum current. Now when VGS is applied, then this value is IDS1. Suppose this is IDS new, IDS1, then this is IDS2, then this is IDS3. So जैसे हम अगर इस कर्व से देखें, as VGS is increasing, the IDSS becomes saturate very fast. Clear है? So you just see, जितना ज्यादा negative voltage लगाओगे, then the drain to source maximum current will be give you faster value. Clear है यहाँ तक? So this is all about what? The output characteristic. Now output characteristic से जो मुझे एक terminology समझ में आ रही है, that is known as पिंच ऑफ वोल्टेज. तो सबसे पहले हम पिंच ऑफ वोल्टेज को समझेंगे, फिर पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद जो है हमारा एक इसमें टॉपिक रह जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, उसको भी समझेंगे. बट पहले हम लोग
पिंच ऑफ वोल्टेज को समझ लेते हैं कि पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। नाउ समझते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है। पिंच ऑफ voltage. Now that voltage is represented by BP. Now this voltage has different definition, so I will give you all the definition. Now the first definition is what? The definition. First definition है, it is the drain. It is the drain to source voltage. It is the drain to source voltage. Voltage at which the ID is equals to IDSS, that is saturated current, saturation या saturated drain current, अगर आपने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक अभी देखी थी तब, ठीक है। सो इट इज द ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज एट विच द ड्रेन करंट बिकम सैचुरेटेड, द फर्स्ट डेफिनेशन। देन द सेकंड डेफिनेशन, if you have the Shockley equation, that is ID equals to IDSS1 minus VGS upon BP का square. Now we have two condition here. Now when VGS is 0, then VGS is 0, so 0 by 1, 0 by BP is 0, then it is only IDSS, then ID equals to IDSS, and this is the maximum value of the current. This is the maximum value of the current. Now when VGS equals to VP, now when VGS equals to VP, this factor is 1, so 1 minus 1 is 0, and 0 multiplied by IDSS is 0, so ID is 0, so ID is 0, that is called minimum current. So it is the voltage, it is gate to source voltage, at which no drain current exists, clear है। so it is the second definition. now third definition की अगर मैं बात करता हूं कि पिंच ऑफ वोल्टेज की डेफिनेशन क्या होती है, then it is the voltage that differentiate between the, it is not exact word, it is the voltage that it is the value of drain to source voltage which changes Jfat from linear region to saturation region and vice versa. What is that meaning? Now if VDS is less than BP, then Jfat is working in linear region. That region is known as the linear resistor, and here the ID and VDSs are proportional. Now if VDS is greater than BP, then Jfat is working as constant current source, so it is the boundary that differentiate between the two region. When it goes left to this region, then you are linear region. When you move to the right of this region, then it is a constant current region. So it is the boundary between two regions. Simply it is boundary between the two region. I hope so जो पिंच ऑफ वोल्टेज है वो क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या है, तो बीपी की जो रेंज है दैट इज 2 to 6 वोल्ट, ठीक है यहां तक। सो फॉर field effect transistor the pinch of voltage is 2 to 6 volt range. So I hope so output characteristics क्लियर हो गई होगी, pinch of voltage क्लियर हो गया होगा। नाउ अब जो हमारा लास्ट पॉइंट रह गया है इसमें दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। सो स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक।
सो स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट इज ए कर्व ड्रॉन बिटवीन, इट इज ए कर्व ड्रॉन बिटवीन ID and that is drain current and gate to source voltage for constant value of output voltage, or we can say VDS। ठीक है। Now पहले मैं मैथमेटिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, then I will also explain with graphically। Now according to Shockley equation, ID equals to IDSS1 minus VGS upon VP that is square. Now when VGS is 0, when VGS is 0, then we have ID is equals to IDSS, that is maximum current, that is the maximum current. Now when VGS is equals to VP, when VGS is equals to VP, then ID is 0, when ID is 0. So when VGS is minimum, this is VGS is a minimum, this is minimum, then this is maximum. Now when this is maximum, it is minimum. So when it is maximum, it is minimum. So if you draw the curve, ID, now VGS is negative, so VGS is negative. So if you roughly draw this curve, when VGS is 0, when VGS is 0, the drain current is maximum. Now when VGS is maximum, the drain current is 0. So curve is look like that. It will look like that. Clear? So its shape is parabolic. Now ये तो कर्व से समझ में आ रहा है। अगर आप मैथमेटिकली देखें, इफ यू सी द मैथमेटिकली, देन ID is equals to IDSS1 minus VGS upon VP का स्क्वायर। Now this is your input, and this is your output. Clear? So transfer curve is a curve drawn between the input and output voltage. Okay. Now if you see, then it is like Y equals to 4A square. Clear? So that's why it is the parabolic shape. Now अभी कैसे draw होती है उसको हम और थोड़ा सा समझ लेते हैं। Now suppose we are having the output characteristic, as well as output characteristic is drawn between the drain current and VDS. So for VGS 0, I'm just drawing this curve. So corresponding to this curve, this is the value. Now this is VGS, this is minus of VGS, that is minus VGS. So it is -1, -2, -3 and -4. ठीक है बेटा यहाँ तक। Now we are drawing the transfer characteristic as well as the output characteristic at the same plane, So it is ID versus VDS, that is output curve, and ID versus VGS, that is called the transfer characteristic curve. Now this curve is when VGS is 0 volt. Now if I take VGS applied, then this is the curve like that. So suppose when VGS is -1 volt, it is -1 volt. Clear है यहाँ तक? Then VGS is -2 volt, and further we have VGS is -3 volt. Clear है? Then corresponding to these curve, we have different lines also. We have different lines. This is the different line, this is your different line. Now so this is touching to this point when VGS is 0, and this curve is touching to -1 volt. So this is -1, then next one is for -2, this is for -2, this is 1 0, then next is for VGS -3. So like that you can have the curve. So if you roughly draw the curve, then the curve is like that. So this is your transfer characteristic curve. So this one is transfer characteristic curve, and this is your
आउटपुट कर्व। ठीक है यहां तक। तो आई होप आपको जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, पिच ऑफ वोल्टेज है और जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है वो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है यहां तक।